गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आइए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके इस वैज्ञानिक चैनल में। और आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इटरेटिव स्टेटमेंट के सी टाइप के प्रोग्राम 5 और 6 का कोडिंग के साथ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, all program, Python version and ideally, and you can see this is the question. Write a program to input the length of a 3 sides of a triangle and then check if these sides will be from a triangle or not। कह रहा है कि आपको 3 इनपुट लेना है साइड का, एक ट्रायंगल का, और ये चेक करना है कि वो तीनों साइड को लेने के बाद क्या वो साइड्स एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए आइए प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं। सो कम टू द फाइल मेन्यू, न्यू, and then we'll start. A equals to integer value input function, enter first side, same will use for second side, same we will use for third side, after that we will check the condition while using if else statement. So see, if a plus b is greater than c, then print and the message we will use 3 sides of a triangle or sides form a triangle. If b plus c is greater than a, then sides form a triangle. If c plus a is greater than b, side forms a triangle. Else print sides are not valid to form a triangle. So after that we will save this program with any name .py on the location and then click on run menu, run module. See the first side 6, second side 7, and the third size is 11. So see the answer.
So like this we can do the practical of this question while watching carefully this code. So moving to the next program, आइए अब हम लोग अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं. See, we have a question like write a program to input a digit and print in words. कह रहा है कि आपको डिजिट में इनपुट करना है और वर्ड्स में प्रिंट करना है. डी लेंगे और इनपुट करेंगे. इनपुट मैसेज लिख दिया हमने. उसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे एंटर एनी डिजिट. If D is less than or equal to 0 and D is greater than or equal to 0 and D is less than or equal to 9, it means print this is digit. Elif D equals to 1. Print one. Elif D equals to 2. Print 2. Elif D equals to 3. Print 3. Elif D equals to 4. Print 4. D equals to 5. Print 5. D equals to 6. Print 6. D equals to 7. Print 7. Elif D equals to 8. Print 8. D equals to 9. Print 9. Else
print it is not digit. After that, we will save this program and then click on run module and run the program. See, it will ask user to input the number. तो आशा करते हैं आपको ये भी प्रोग्राम प्रैक्टिकल करके समझ में आ जाएगा, और यदि आपको यह प्रोग्राम प्रैक्टिकली समझ में आए तो कृपया आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।